Hi, hello, namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. So today is our lecture number 1 of history. So we'll start with ancient history. Once we complete ancient, we will go to medieval and it will be followed by modern. So let's start with ancient one. So the history can be broadly classified into 3 types. One is prehistory, one is proto-history, and one is history. In prehistory, there is no written records like the Stone Age. In proto-history, the records are written, but it is not deciphered yet. लिखा तो होइछि बट कौन लिखा है ताको आमे जानि पारु नांती बिकॉज द रिटन इज नॉट डेसिफर्ड. आमे ता एपर्यंत क्रैक करि पार नांती कि व्हाट लैंग्वेज दे हैव यूज्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइन दैट दे हैव यूज्ड इन द राइटिंग्स. आवर हिस्ट्री थर्ड फेज इज रिटन रिकॉर्ड्स एंड इट इज डेसिफर्ड. जेबेठू मनीष लिखा शिखिलानी तापरे जो हिस्ट्री आछि इट इज रिटेन ताको आम डेसिफर भी करि पारछंती, आमे पढ़ी भी पारछंती आ जानि भी पारछंती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ब्रॉड टाइमलाइन्स and the phases. So ancient history start with prehistoric period. Prehistoric period में 3टा फेज रहिबो, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Lithic means stone. Paleolithic phase around 5 lakh BC रू स्टार्ट है कि 10,000 BC पर्यंत चलला. Then Mesolithic started in 10,000 BC and it lasts up to 6,000 BC. Neolithic means new stone age which started around 600 BC, 6,000 BC up to 3,000 BC. So timeline केमती एटा 0 आमे एबे अछंती 2026 एमती आगे आगू बढ़ुंट. 0 पूर्व जिते सब रहिले से सब रहिले बिफोर क्राइस्ट और बीसी. एपटू जी रे 0 एपटू जी रे सब एडी. बीसी केमती 0 एटा 1 BC 2 BC 3 BC एमती करके पछक पछ चलिबो. प्री हिस्ट्री रे 3टा पीरियड मन रखियो. पालियोलिथिक माने एटा सबुठू ओल्ड स्टोन एज, मेजोलिथिक द मिडिल पीरियड एंड न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन एज. देन प्रोटो हिस्ट्री देखो. प्रोटो हिस्ट्री रे हिस्ट्री तो लिखा है बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर इट लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन. इंडस वैली हरप्पन इज द सेम सिविलाइजेशन. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. प्रथमे आमे इंडस वैली ताको मिलिथिला तो ता ना सेति इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ी, बट डिपेंडिंग अपॉन द name and depending upon the site they have named it. Then आरो टाइमलाइन जे देखिवो इंडस वैली सिविलाइजेशन नो IVC आरो टाइमलाइन होची 2600 BC रो नेकी जस्ट गोटे मिनिट 2600 BC रो नेकी 1800 BC. तापर आसला चाल्कोलिथिक फेज जोटा कि 1800 BC रू नहीं कि 1500 BC. आमे फास्ट देखले कौन, फास्ट देखले प्री हिस्टोरिक फेज, पालियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, देन प्रोटो हिस्ट्री जो रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाल्कोलिथिक फेज. तापर तुम आसला द एडवेंट ऑफ आर्यन्स. आर्यन माने जेतले इंडिया रे आसिक सेटल हेले देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आम सेटा भी पढ़ा
आर्यन मैंने जो आसिले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन है देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कजेस माने स्कॉलर माने अलग अलग तांकर व्यूज देते सो वी विल स्टडी दैट थिंग्स इन डिटेल सो एडवेंट ऑफ आर्यंस केबे स्टार्ट है अराउंड 1500 बीसी तापर तुम स्टार्ट है बेदिक एज रो दुटा फेज अच्छी अर्ली बेदिक एज जोटा कि आम ऋग्वेद अराउंड 1500 रु स्टार्ट करी 1000 बीसी पर्यंत एंड देन लैटर बेदिक एज 6 एटा 1000 बीसी रो नहीं 6 सेंचुरी माने 1000 रु नहीं 600 पर्यंत एपटे एटी आसो कौन तापर आसो जीरो फाइन तापर आसला 6 सेंचुरी बीसी जोटी तुम लेटर बेदिक एज सरला राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका एटसेट्रा ऑल दिस बुद्धिस्ट जैन आजीविका सब 6 सेंचुरी बीसी स्टार्ट है बिफोर इवन द एक्जिस्टेंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी आसवा आगु ये सब धर्म आस सारी राइज ऑफ 16 महाजनपद केमी जनपद फॉर्मेशन है कोटी कोटी तार लोकेशन रहा एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर देन द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज वेरी important and powerful city of that time because of the physical characteristics of Magadha. They were very powerful. It was started with Haryanka dynasty 554 BC to 412 BC. Then Sisunaga dynasty. It followed by Nanda dynasty. And Nanda dynasty को मौर्य dynasty ताको हरैकी जो ओके अशोकांकर जो आंसेस्टर थिले ठीक अशोकांकर आंसेस्टर विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सी मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट करते देन पोस्ट मौर्यन एज पर जिते इनवेडर आसले आउटसाइडर इनवेडर लाइक इंडो ग्रीक सकास पार्थियंस एंड कुषाण पिला यही प्रोब्लेम हुए यही टाइम लाइन में पिला प्रोब्लेम थाए जदि आम टाइम लाइन ठीक न बुझा ताले आमर जो आम पढ़ा आम ही कन्फ्यूज हो अबाउट द एज से टाइम लाइन बुझा बहुत जरूरी इंडो ग्रीक आसले 165 बीसी तापर आसले सकास 90 बीसी पार्थियंस 25 एडी एंड कुषाण 65 एडी मौर्यर पीरियड थिला 321 बीसी रू नहीं 185 बीसी तापर इंडिजिनस को माने थिले सुंगा डायनेस्टी हो गला कान्वा डायनेस्टी हो गला सातवाहन डायनेस्टी हो गला दे इमर्ज इन सेकेंड सेंचुरी बीसी सातवाहन कंसोलिडेटेड देयर पावर इन फर्स्ट सेंचुरी एडी तापर आम देखिए गुप्ता एज इट इज नोन एज द गोल्डन एज because of the political stability Gupta age is known as golden age because at that time astronomy then mathematics music art form okay like medicines ये सबूर डेवलपमेंट होता से टाइम रे कालिदास से टाइम रे पोएट माने पोएम लिखते जोटा कि ओके माने at the time of Gupta it was very it was the very phase in which the political stability was there and they are providing the Gupta are providing or becoming the patterns of such art form तांको हेल्प करते पैटर्न माने जो मैंने हेल्प करते तांको तो गुप्ता एज रे चंद्रगुप्त 1 से चंद्रगुप्त मौर्य ये चंद्रगुप्त 1 डोंट बी कन्फ्यूज एमंग द नेम्स देन समुद्रगुप्त
चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त. देन वी विल मूव टू संगम एज जोटा कि साउथ इंडियन रो तमिल संगम 3rd सेंचुरी बीसी नहीं कि 6th सेंचुरी एडी ऑलमोस्ट 900 इयर्स. आम से पढ़ा द चेरास, द चोलास एंड द पांड्या. 3टा किंगडम थिले चेरा, चोला, पांड्या. देन पोस्ट गुप्ता एज रे आसले तुमर पुष्याभूति डायनेस्टी. पुष्याभूति डायनेस्टी आसले 7th सेंचुरी एडी. संगम एज पर कौन आसले? संगम एज पर आसले पल्लव, अर्ली 7th सेंचुरी आसले. देन चालुक्य, मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी. By the end of 9th century, Imperial Chola, Pallava, then Chalukya, then Imperial Chola or mainland Chola. By 750 AD, Pala dynasty, then Pratihara dynasty, Pratihara Gurjara dynasty, then Rashtrakuta dynasty. आमे ए सबू मैप रे देखिबा. सो डोंट योर कन्फ्यूजन विल बी और whatever the confusion you have, it will be cleared. तापरे आसीबो. with this we will complete this ancient part and then medieval history will there. So medieval history आमे तो medieval history पढ़िबा. we will again study the timeline, but आमे जो ऊपर पढ़ले these are the timeline of this ancient history. आउ ए सबू को हमको कवर करार अच्छी. सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 10 to 12 लेक्चर्स. 10 ରୁ 12 लेक्चर भितर आगु आम कंप्लीट करने चेष्टा करवा. ओके. बीसी है बिफोर क्राइस्ट और बीसी दैट इज बिफोर कॉमन एरा. एडी दैट इज नोन एज अन्नो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड माने जब जीसस क्राइस्ट आसते दैट इज टेकन एज 0 और सी ताको भी कहते कॉमन एरा. So let's start with okay. आमे बर्तमान स्टार्ट करिवा with the ancient part of Paleolithic phase. Paleolithic phase आमे जेमती कहले कि 3टा थिला. लोअर Paleolithic, then middle Paleolithic and upper Paleolithic. लोअर माने बुझ तो एतल तुम खोली 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 जीव जोटा 500 वर्ष तले गोटे जिनस पोती होती, गोटे जिनस 700 वर्ष तले पोती होती, गोटे 900 वर्ष तले पोती होती माटी तले. तो जो ऑब्वियसली जोटा 900 तले थी ये थी तापर 700 थी तापर 500 थी. तो जो आम यूँ खोली खोली जावा आम तो ऊपर खोली खोली जावा आम आगे मिल दिस ऊपर Paleolithic, तापर दिस मिडिल Paleolithic, आ सब तले जोटा थी दैट इज द लोअर Paleolithic एज. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दैट इज यूज्ड. कोटी कार्बन डेटिंग यूज करा जाए एंड अदर टेक्निक्स आर आल्सो देयर. केमिकल टेक्निक्स अच्छी तक पाखे टू फाइंड आउट द टाइमलाइन. राइट. सो देखो लोअर Paleolithic 5 लाख रू 1 लाख BC. दे यूज्ड बिग रफ एंड इरेगुलर शेप्ड टूल्स. तांकर जो टूल्स थिला लाइक किसी गछ काटिबार अच्छी कि शिकार करार अच्छी, दे आर बिग रफ माने पॉलिश नथिला एंड इरेगुलर शेप्ड. द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर हैंड एक्स, हाथर जो धरती एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स. हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स. द टूल्स ऑफ दिस Paleolithic एज कोड कोड मिली लाइक भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, सोहान वैली इन पाकिस्तान, बालन वैली इन मिर्जापुर और MP, नर्मदा वैली, देन ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका एंड कर्नूल इन आंध्र प्रदेश और AP. ये सब जिन जस्ट पढ़ ए बहुत सारा क्वेश्चन आसबार चांसेस इज वेरी लेस. फाइन. जो क्वेश्चन आसो आई विल फोकस ऑन दैट. मुझे तुमको कहीदेवी एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू थ्रू दैट पार्ट. जो मिडिल Paleolithic एज स्टार्ट है अराउंड 1 लाख BC रू नहीं 40,000 BC पर्यंत. द शेप ऑफ द टूल्स वे रेक्टांगुलर.
The character stills were boards, borines and blades. And upper Paleolithic age, the shape is changed to triangular. Blades, points ଏସବୁ ଟୁଲ୍ସ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ. ଫାଇନ୍. କମ୍ ଟୁ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍. ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍. ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍. ମେଜୋଲିଥିକ୍ ମିନ୍ସ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି. ଦିସ୍ ଫେଜ୍ ୱେର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭେରି କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟୁ ୱାର୍ମ ଫେଜ୍. ଦେଖ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କେତେ ଅଛି 10,000 ନେଇକି 6,000 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. तो एतबले कौन होता दिस फेज वाज ए ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म फेज. जो आइस एज थिला द आइस एज बिगन्स टू डिक्लाइन. आइस डिक्लाइन करिया स्टार्ट कला. टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिगन्स टू राइज. इट वाज कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मीन्स द फ्लोरा एंड फौना like the animals and plants. Moreover, human beings started to move to different places. Mesolithic phase also witnessed demonstration of animals. Evidence have been found from Adamgarh, MP and Bagohar, that is Rajasthan. Mesolithic phase रे लोक माने travel करथिले from one place to another place using animals. The stone tool used by them is known as microlith. एटा मन रखियो तांको द्वारा जो stone रो tool यूज करथिल that is microlith. माने size was compact, which was small and sharp, also easy to operate. It was only effective in the killing of animals, but also facilitated rock engraving or Mesolithic painting or ताको कौन कौन करथिले से केवल एनिमल हंट करिया पे से यूज करनथिले. रादर दे आर यूज्ड इज इन रॉक एनग्रेविंग. रॉक को काटी की किछि लिखिबा एनग्रेव करिबा ऑन द रॉक्स शिलालेख जोटा हम कहउचंदी. देन द मेजोलिथिक पेंटिंग रे भी से माने ए टूल्स को यूज करथिले. व्हाट आर द मेजोलिथिक पेंटिंग्स देन? इट प्रोवाइड्स इंपोर्टेंट इनसाइट इनटू सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मेजोलिथिक कम्युनिटी. यदि आम आज डेट रे गोटे फोटो नवा लेट तुम छिड़ा है राजमहल छिड़ा है तुम गोटे फोटोज नेल ताकू 400 ईयर पर गोटे लोक देख सो सी कौन पाइब से कि देर आर सम बसेस, देर आर सम बाइक्स, देर आर सम कार्स. किसी लोग चलिक जाऊे, किसी लोग साइकिल जाऊे, किसी लोग छिड़ा होते. सो दैट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ दैट टाइम. What are the social structures, what are the cultural traits of that time that can be found out by reading thus or by visualizing or by analyzing the pictures that is present. They used naturally obtained colors like green, yellow, brown, red. सेतबेले से कौन करथिले कलर जो यूज करथिले नेचुराली मिलिबो. लाइक येलो को तुम मिलिबो हळदी येलो मिल परिबो. ग्रीन तुम हेना लिप्स वगैरह मिल परिबो. ब्राउन पे आइदर दे कैन यूज सम माने माटीर कलर भी से यूज करि पारे. रेड सम इनसेक्ट इज देयर जो रेड कलर आसे. सो दे आर यूजिंग बिकज से तो टेक्नोलॉजी नथिला डेवलप तो छाड़ा दूर कथा टेक्नोलॉजी नथिला. सो व्हाट इज occurring in the nature they can use only that color. Red color was also sourced from animal blood. They created wide variety of themes which are as follows. कौन कौन थिला तांको थीम रे? हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल राइडिंग. हंट करचंती कोठी कोठी लोक गैदर है कि लोक छिड़ा है कि किछि भी माने कम्युनिटी वाला प्रोग्राम करचंती. And animal riding. This is the inference domestication of animals. एथु जना पड़छि कि at that time at Mesolithic period the domestication of animal was also practiced.
Then there is evidence of group dance. Picture रे group dance picture भी अच्छी, so that is showing the community sense among the peoples. Then other pictures like celebration, fighting, then sexual union, primitive marriage, household chores, then yoni worship, okay, ये सब जिनस पेंटिंग ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी. Then come the third phase, that is Neolithic phase, from 6th century BC to 3rd century BC. In this phase, human beings started to live in larger community in thatched house. Thatched माने जो चाला वाला घर. The stone tools used by them was not only small and sharp but also polished. एबे से polished वाला tools use करे start कर देथिले. They were also instance of usage of bone implements and also usage of bow and arrow. Bone रू तैयारी करिबा माने bone को भी से माने यूज करथिले as weapons and also bow and arrow माने धनु आ जो सर कहते ताको. The most important development in the Neolithic phase was start of agriculture practice. Question आसियो एठू को फेज रे ह्यूमन सेटलमेंट रे फर्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर एविडेंस मिलता. क्वेश्चन एमती फ्रेम हुए. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़. मेहरगढ़ कौटी अच्छी? बालोचिस्तान इन पाकिस्तान. बालोच गोटे कंट्री अच्छी मैंने बालोच इज ए रीजन इन पाकिस्तान. ये देखते धुरंधर 2 रे भी मैंने बहुत सारा आलोचना है बालोच विषय. सो मेहरगढ़ जोटा अच्छी से फास्ट एविडेंस मिलता एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. लोक मैंने जिते आगुरी कौन करते लोक मैंने गोटे जगार आ गोटे जगह को बुलूले बिकज दे डोंट नो एनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. तो जो से एग्रीकल्चर करवा शिखिले आगुरी कौन होता गोटे जगार ये रहिले ये माने शिकार कले फल खाइले जो सरीगला आ गोटे जगह गले से फल खाइले शिकार कले फिर से सरीगला फिर आ गोटे जगह गले एमती बुलूले. जो से एग्रीकल्चर करवा शिखिले से गोटे जगह रहा शिखिगले. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल was also started. Human beings created wheel and wheel made pottery. Wheel जो अच्छी wheel invented है पर ताज़ा pottery तैयारी करा. pottery माने माटे तैयारी होती जो utensils. They also mastered control use of fire. से माने जानते फायर को केमती extinguish करियार अच्छी केमती ताको माने फिर तर जळेबार अच्छी. They got to know about this. भीमबेटका रे सबू फेज रो एविडेंस मिलूँ. भीमबेटका इज द ओनली साइट वेयर ऑल फेजेस माने से मिजोलिथिक हो से न्यूलिथिक हो से पालियोलिथिक हो सबू फेज रो एविडेंस मिलूँ इन भीमबेटका. भीमबेटका गोटे अच्छी मध्य प्रदेश एमपी. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ हिस्ट्री. अदर इम्पोर्टेंट साइट्स कौन है? गफकराल बुर्जुहम काश्मीर, चिरांद इन बिहार, सराई नहराया इन उत्तर प्रदेश. सो ड्यूरिंग न्यूलिथिक फेज रे एग्रीकल्चर स्टार्ट है. जो सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर है लेट तांको फैमिली दरकार 100 kg बट दे हैव प्रोड्यूस 300 kg. एबे कौन करिए एक्स्ट्रा जो रहा दैट इज गॉन फॉर द ट्रेड जोटी कले से ट्रेड सेंटर डेवलप है. देयर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, देयर इज यूटिलिटी सर्विस, देयर आर हाउसेस अराउंड द ट्रेड सेंटर, फैसिलिटी ऑफ स्टोर. देन these all leads to urban nature and these all started with the Indus Valley civilization. Neolithic phase ru now this is the transformation to Indus Valley civilization, right? So Indus Valley civilization is one of the favorite chapter of OPSC. OPSC एथर क्वेश्चन से पचारे बहुत इजी बट ओपीएससी क्वेश्चन पचारे. सो वी
we would put or full attention देकी तुम सुनियार अच्छी because this notes is already shared with our students जो मैंने PPP program रे अच्छी prelims precision program it is already shared with them and those who are planning to join this PPP you can join. If you'll join soon then the price will be 4,999 maybe I got take either seat ochi so after that the price will be raised to 5,999. Okay, this is just a piece of information that I need to share. Fine, देखो so Indus Valley civilization the timeline is 2600 BC to 1800 BC. कोट तुमको 1800 मिलियो कोटी 1600 मिलियो but it is the range is like that only or it is also known as Harappan civilization. The information about an underlying civilization in the Punjab area was available from 1870s when railway line was laid down between Lahore and Karachi. 1870 मसीहा पाखापाखि गोटे सिविलाइजेशन थिला बोली ठीक गोटे सिविलाइजेशन थिला बोली से माने फाइंड आउट कले जेतले से माने ट्रेन लाइन पकाउथिले बिटवीन लाहौर एंड कराची इन 1920 ओके 1870 से माने फाउंड आउट कले कि देयर इज ए अंडरलाइंग सिविलाइजेशन से खाली जानले कि गोटे सिविलाइजेशन अछि बट दैट वाज नॉट माने सेतले एक्सकावेशन हे नथला तो जेहेतु एक्सकावेशन हे नथला तो किछि जणा पड़लानी बट से माने जानले कि गोटे सिविलाइजेशन अछि. द टाइम मूव टू 1920 1920 मसीहा व्हेन J.H. मार्शल बिकम द हेड ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया OPSC इथर क्वेश्चन पचारथिला डायरेक्ट माने वन लॉन्ग क्वेश्चन आसथिला इन मेंस अबाउट दिस ASI. सो 1920 रे J.H. मार्शल became the head of ASI. He gave task of excavation of two Indians such in 1921 Jonel Dayaram Sahani excavated the site Harappa in 1922 AD okay and R.D. Banerjee ଆଉ ଜଣେ Indian he excavated the site of Mohenjo-daro. दयाराम साहानी हड़प्पा रे एक्सकावेशन कले 1922 रे R.D. Banerjee he started excavating the site of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the mound or the mountain of dead. By this time it was firmly established that IBC was the first or most advanced civilization of the world, one of the most advanced and one of the first civilization of the world. As compared to Egyptian civilization, it did not had any monumental buildings like pyramids, but Indus Valley was unique in the sense for its urban planning and usage of burnt brick of same shape and size. Urban planning was special in Indus Valley civilization and use of burnt brick पोड़ा इटा को से पोड़ी के यूज करते फाइन. In the cities or in the sites like Harappa and Mohenjo-daro there is textile production was there. In Kalibangan एटा राजस्थान में अच्छी there is bangle industry. In Chanudaro there is bead. In Lothal in Gujarat there is dockyard. Lothal is kind of a port. इटी शिपिंग वगैरह होता. लोथाल प्लस रैंकपुर एटी राइस कल्टिवेशन रो एविडेंस मिली. राखीगाड़ी द लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC इट इज इन हरियाणा. राखीगाड़ी जस्ट
2-3 years आगु ही माने एक्सकवेशन होगी तार साइट मिली। देन ढोलावीरा 3 layer of urban planning. Fine, these are some of the sites of Indus Valley. Just look at the town planning of IBC. The first part is Citadel. It is on a raised platform. Citadel जोड़ा गोटे रेस्ट प्लाटफॉर्म रे थिला, ता तळकू लोअर टाउन्स थिला एंड द टाउन्स आउ टाउन्स विथ जो रोड्स थिले दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट रेक्टेंगल सॉरी एट राइट एंगल 90 डिग्री सबू स्ट्रीट को काटुथिले. So it is easier for cleaning, it is easier for planning. In the drainage system they are using gypsum coating. Gypsum is the same material which is used for making cement. Cement making रे gypsum use कर रहे हैं. Gypsum is the agent which binds the gravels, the sand particles and cement. Cement ये सब को से बांध के रखे gypsum. Generally Indus towns were divided into two parts, upper town and lower town. Upper town कोड़ा, this is the upper town, Citadel. Fine. Upper town as known as Citadel, created on oppressed platform. It is part of town. Administrative buildings were created. In this part माने Citadel रे administrative buildings create करा होतला. This area also have granary and common bath. ये सबू कोड थिला Citadel रे थिला. Granary was for storage of grains. It was created in scientific manner so that grains must not get spoiled even when they are stored for longer duration. यदि ताको scientifically store न करिवे ताले कौन होबो, जहाँ भी grains अच्छी that will be spoiled. Common bath was a stepped water tank meant for spiritual bathing. गोटे great bath थिला, सेटा spiritual bathing रे यूज करते से माने. The best example of common bath is great bath of Mohenjo-daro. एम देखो स्टेयर सब अच्छी एपटे ओल्लैबे, ये ओल्लैकी माने बात करेंगे तो नियर बाई तांकर से जो प्लेस थिला सेठी वेल्स थिला, से वेल रो पानी काढ़ी आ भीतर पकाउथिले एंड ऑल्सो देयर इज सिस्टम ऑफ ड्रेनेज. जेतले से पानी बाहर करे थिला ड्रेन व्यवस्था थिला, से ड्रेन थ्रू रे से पानी को बाहर कर देउथिले. इन द स्टेयर्स वर मेड in north south direction and they were made from bricks. इटा रही से bricks सबू इटा रही से stair सबू तैयारी हितला. As compared to upper town, lower town was quite big in size and meant for habitation of common people. Citadel अनुसार common town जोटा थिला जोटा lower town सेटा बहुत बड़ा थिला. Lower town was based on sectoral planning which meant it has divided into many sectors. जमी चंडीगढ़ तुम जीव चंडीगढ़ सबू पार्ट ऑफ दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. सेक्टर कले कौन हम, सेक्टर कले माने रोड नबा कि प्लानिंग करिया विल बिकम इजी. सिटीज को छोट छोट सेक्टर रे डिवाइड करा हबो. तो जदि आम ईच सेक्टर को प्रॉपर्ली ध्यान देकी डेवलप करिया ताल सब सेक्टर डेवलप हो जिवो. सब सेक्टर डेवलप हो जिवो तो एंटायर सिटी विल बी डेवलप्ड. देयर वाज very good network of roads in the lower town and roads were cut each other at right angle. मुझे जमती कहती कि रास्ता गुड़ा सब each other को 90 डिग्री रे कट करते. On both the sides of the roads drains were created in scientific pattern. माने ड्रेन एमिति तैयारी हितला सिटीज रे कि से पानी गुड़ा नेचुरली on the using the gravitation force they were माने से तल तो किसी मोटर भी नथिला ना, तो पानी केन फ्लो होतला using the gravitation force. The drains were covered with stone slabs or brick slabs. Either stone ने तैयारी होतला किंबा brick रे तैयारी करी के से माने ता कवर कर रखुतले. Inside the drains manholes were created which was plastered with gypsum. Manhole थिला केतले drain को clean करियार अछि. It was also closed with gypsum. प्लास्टर करथिले माने बुझ परछ तो जो ड्रेन थिला ड्रेन रो चारिपटे कोटिंग लगा होतला सो दैट कि एटा माटी जेहेतु तैयारी होतला ड्रेनटा से माटी
माने जदि पानी सबल रहिबो से माटी खराब कर दो से माटी आसिकी से ड्रेन को सिल्टेशन होगी बंद हो से ड्रेन तो ताकू बचाइबा से जिप्सम कोटिंग यूज करते इट हेल्प इन फिल्टरिंग द वेस्ट एंड रिचार्जिंग ग्राउंड विथ वाटर इनसाइड द सेक्टर देयर वाज इंस्टेंस ऑफ सिंगल स्टोरी डबल एंड ट्रिपल स्टोरी हाउसेस गोटे ताला वाला दी ताला वाला आउ तीन ताला वाला बिल्डिंग भी सेटा वाला थिला all the houses were made from burnt brick of same shape and size ratio is 4:2:1 inside the houses कौन रहता bedrooms courtyards separate kitchen and separate washroom was created all the houses were connected with main drain for waste disposal पे प्रत्येक घर कनेक्टेड थिला with the street जो ड्रेन थिला तार सहित कनेक्टेड थिला Indus Valley people were concerned about their privacy. That's why they did not created main gates of their house facing main road. तांको घरर जेहेतु प्राइवेसी से प्रोटेक्ट करथिला तो घरर एटा रास्ता अछि घरर मेन गेट एठी होनुतला एटा घरर मेन गेट एपट किछि रखथुले ओके तो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करिया पे इट सीम्स दैट देयर वाज ए वेरी गुड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन IBC it indicated towards the usage of decimal system माने से माने सेबे भी डेसिमल सिस्टम रो विषय जानी थिले राइट लुकिंग एट द टाउन प्लानिंग ऑफ IBC it can be inferred that Indus Valley was a central authority according to majority of historians it was believed that Indus towns were administered by rich trader and merchant instead of monarchy city chances are high कि it is administered by rich merchant and trader जो मानकर बहुत पैसे थिला we have not come across any instance of standing army in Indus Valley रे किसी standing army थिला आर पर्यंत किसी प्रमाण मिलनी okay so we'll stop it here in the next class we will move from this economy activity and we'll complete the IBC thanks for watching the lecture have a great day